Vedas are amongst the oldest religious scriptures known to mankind, and are the source of India's spiritual and cultural heritage. At first glance, the multifaceted culture of the Vedas is a foreign and fascinating mystery to the Western eye. Yet upon deeper examination, we discover a wealth of philosophical, cultural, and social values. India is renowned the world over for the practice of yoga, which increases one's mental and physical strength. However, this is only a fraction of what the Vedas can offer to a progressive global community. India's culinary arts, music, natural medicine, and other sciences are only now becoming known to the West. Conceivably the world's oldest holistic design system, the Vastu Shastra predates and inspired the popular Chinese system of Feng Shui. The design of a temple, house, or workspace has been proven to exert a considerable influence on one's well-being. The Vastu Shastra was compiled specifically to address this concern and offers practical architectural guidelines. This style of sacred architecture has been implemented in the building of India's largest temples for thousands of years. The sculptures adorning these temples reflect the development and accomplishments of one of man's oldest civilizations. They depict the struggles, failures, and successes of the men who made them the center of their lives. The sophisticated Vedic sciences of astrology, astronomy, cosmology, and metaphysics profoundly influenced the Greeks, Babylonians, and even contemporary scientists with their unparalleled knowledge. Ancient Vedic sages presented precise calculations a millennium before Copernicus, Galileo, Newton, and Einstein. Early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology. Max Muller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Thomas Macaulay, who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. However, the German philosopher Arthur Schopenhauer stated that the Sanskrit understanding of these Indologists was like that of young schoolboys. These early Indologists devised the Aryan invasion theory, denying India's Vedic past. They taught that the English educational system is superior. They intentionally misinterpreted Sanskrit texts to make the Vedas look primitive, and they systematically tried to make Indians ashamed of their own culture. Thus, the actions of these Indologists seems to indicate that they were motivated by a racial bias. So now we will proceed for the talk. Before this, let me again recite the list of the great personalities that are here with us. We have amongst us His Holiness Bhakti Brihad Bhagwat Swami Maharaj Ji. We have His Grace Rukmini Krishna Prabhu Ji, His Grace Nam Prem Prabhu Ji, His Grace Akrur Nandan Prabhu Ji, and so many of the other magnificent personalities. Now we'll proceed with the spiritual talk by His Grace Rukmini Krishna Prabhu Ji. As an introduction, as I said, he completed his education from the prestigious Institute of BITS Pilani, and he is a gold medalist from there. Then he worked as a senior manager in BPCL company. Afterwards, he
chose a path of purpose and service. And he's a monk for last 30 years. He's an international speaker and motivator as well. And he's serving as the regional secretary for ISKCON for the northern states. Please join me in welcoming His Grace Rukmini Krishna Prabhuji with a big round of applause. हरे कृष्णा. सो वेलकम यू ऑल. आप सबको आज संडे के दिन इस मंदिर में देखिए बहुत खुशी हो रही है. और इससे पहले कि मैं अपना सेशन शुरू करूं, हम कुछ प्रार्थनाएं करेंगे. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हरे कृष्णा. तो अभी आप जो थोड़ा सा वीडियो देख रहे थे, इसमें हम भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति के विषय में आपको बता रहे थे. तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हम सब को अपनी वैदिक संस्कृति पे बहुत गर्व होना चाहिए. अभी आपको समय कम था, आपको जान के हैरानी भी होगी और शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे. पहले भारत जो आज हम जानते हैं, भारत को हम पूरे वर्ल्ड मैप में देखते हैं, पूरे पृथ्वी पर भारत का राज्य था. और इसको क्या बोलते थे? महाभारत, द ग्रेट इंडिया. और आज भी विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों में भारतीय संस्कृति के रेमेनेंट्स अवशेष दिखाई देते हैं. आपको कुछ दिखाएंगे. नेक्स्ट प्लीज. वेदास आप जानते हैं. वेद का मतलब क्या होता है, कोई जानते हैं? वेद किसको कहते हैं? नॉलेज. वेरी गुड. वेद का मतलब है ज्ञान. और ऐसा कोई भी ज्ञान इस संसार का नहीं है जिनको हम वेदों में नहीं पा सकते. वेदों में पूरा वैमानिक शास्त्र था. आज की जो हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरोप्लेन्स देखते हैं, उससे बहुत समय पहले, वैसे क्या बताते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया? राइट. उससे बहुत लाखों साल पहले वेद का मतलब है एटर्नल विजडम. एटर्नल मीन्स शाश्वत, विदाउट बिगनिंग. ये सारे शास्त्र बताए गए हैं. सारा टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, अलग अलग प्रकार के विमान हैं, भद्रक, रुचक, विराजक, भास्कर. ये सब विमानों के अलग अलग टाइप हैं. जैसे आजकल बोइंग है, एयरबस है, उससे भी अलग ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड. नेक्स्ट प्रभु.
सुंदर विमान, आपने सुना रामायण में पुष्पक विमान है ना, साउंडलेस। आजकल हम जो विमान पे बैठते हैं कितना आवाज होता है, फ्यूल की आवश्यकता होती है। पुष्पक विमान मन से चलता है, आपने मन से सोचा यहाँ जाना, पहुंच गए। कमाल है, ये टेक्नोलॉजी थी। आगे बढ़िए। और वैदिक इन्फ्लुएंसेस पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में हमें दिखाई देते हैं। गो फास्ट। ये देखिए सऊदी अरेबिया में एक ब्रह्मा जी की स्टैचू है जो कि हंस पे बैठे हैं। नेक्स्ट प्रभु। हरे कृष्णा। ऐसे आप जाएंगे अर्जेंटीना में हनुमान जी की मूर्ति मिली है। आप रोम के उसमें म्यूजियम में जाएंगे, वहाँ शिवलिंग रखा हुआ है। तो लोगों को मालूम नहीं ये कल्चर कहाँ से आ रहा है। तो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आपको वैदिक संस्कृति दिखाई देगी। हमें चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम कोई हिंदुइज्म बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। कल्चर का क्या मतलब होता है? कल्चर किसको कहते हैं? कल्चर, संस्कृति का अर्थ क्या है? वे ऑफ लिविंग। वेरी गुड, जीवन शैली। और कोई बताइए, आप सब बहुत बुद्धिमान लोग हैं। कल्चर मीन्स व्हाट? इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट। ओके, और कोई? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स वे ऑफ लिविंग, जीवन शैली, हमारा खाने पीने का ढंग, रहने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, हमारा पहनावा। इसको जानना क्यों जरूरी है? हम क्यों चर्चा कर रहे हैं वैदिक संस्कृति की? वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? उससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? पुरानी संस्कृति खत्म हो जा रही, होने दो, क्या दिक्कत है? हमारे पूर्वज क्या थे और कि उन्होंने कैसे मतलब ये इस चीज़ का आविष्कार किया, या हमारी संस्कृति एक्चुअल में क्या थी हमें पता ही नहीं लग रहा। हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला वेस्टर्न कल्चर को, तो पुराना ही सब खत्म होता जा रहा है। ठीक है, मैं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा हूँ, पुराना खत्म हो रहा है, उससे नुकसान क्या है? एथिक्स खत्म हो रही हैं। कैसे? तो चेंज में दिक्कत क्या है? वो हमको अपने धर्म से दूर कर रहे हैं। उससे क्या फर्क क्या पड़ रहा है आपके जीवन में? हैं? कृष्णा से दूर जा रहे हैं, क्या मतलब हुआ इसका? अगर किसी इम्परफेक्ट चीज़ की जगह परफेक्ट चीज़ लाते हैं तो वो अच्छी बात है, पर परफेक्ट की जगह इम्परफेक्ट, वो तो एक लॉस ही है। वाह, क्या नाम है आपका? धवल। धवन, प्रभु जी के लिए तालियां बजाएंगे जोड़े। अरे वाह, बहुत अच्छा इन्होंने समराइज किया कि परफेक्ट को इम्परफेक्ट से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि जो वैदिक संस्कृति आपके हिसाब से परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है? वैदिक संस्कृति परफेक्ट है। परफेक्ट है, और उसको जानना बहुत जरूरी है। हम आपको दिखाएंगे कि ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमारी जीवन शैली होती है वो हमारे एथिक्स, हमारी वैल्यूज, हमारी मानसिकता को प्रभावित करती है। और हम सब इस संसार में किस चीज को ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस को, आनंद को। और हमें ऐसा प्रॉमिस किया जाता है कि इस प्रकार की जीवन शैली आप जियोगे, इसमें आप खुश रहोगे। लेकिन हम दिखाएंगे आपको इस रिजल्ट क्या है, इससे बिल्कुल उल्टा है। तो हम अपनी रूट्स, जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति का अर्थ है वेद है, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इस सृष्टि की रचना भगवान ने की। भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि की रचना की और उस सृष्टि में कैसे रहना है उसके लिए एक मैनुअल दिया, वो मैनुअल है वेद। तो वेद के अनुसार अपना जीवन चलाएंगे, मैनुअल के अनुसार मशीन को ऑपरेट करेंगे, मशीन की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी 100%। मैनुअल छोड़कर अपने मनमाने ढंग से मशीन चलाएंगे, हमें भी चोट लगेगी, मशीन भी खराब होगी और नुकसान ही नुकसान होगा।
इसीलिए वेदों को जानना, उसके अनुसार जीवन चलाना बहुत आवश्यक है। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि पहले पूरे विश्व में क्या है, वैदिक संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति मतलब भगवान के आदेशों के अनुसार जीना, सिंपल सी बात। अगर भगवान के आदेशों के अनुसार नहीं जिएंगे तो हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, है ना। अब आपने कोई वॉशिंग मशीन ले आए और उसमें ऊनी कपड़ों को सूती कपड़े के धो दिया, सूती कपड़ों को ऊनी कपड़े धो दिया, कपड़े भी फटेंगे, मशीन भी खराब होगी, नुकसान भी होगा। तो वही चल रहा है हमारे संसार में। यस प्रभु। सो दे आर फ्यू ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, हमने ऐसे बताया कि रोम में आपको शिवलिंग का एक म्यूजियम में दिखाई देगा। आप देखिए भारत में हालांकि इतने आक्रमण हुए, इतना सब कुछ हमारी संस्कृति पे वो सब कुछ हुआ, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं, इसको कोई हिला नहीं पाया, है ना। आज भी आप देखेंगे कैसे हमारे कण कण में हमारे में आध्यात्मिकता है, नो। हम लोग नाम भी कैसे रखते हैं बच्चों का, ज़्यादातर तो भगवान के नाम पे होता है। आपने सुना गणेश बीड़ी, किसी को बीड़ी पीनी है तो गणेश जी का नाम आ रहा है ना। बालाजी वाइन शॉप वाइन शॉप कहाँ से आई, वेस्टर्न कल्चर से, लेकिन बालाजी कहाँ से आए, वैदिक संस्कृति से। तो आप कहीं भी जाएंगे, हमारी जो संस्कृति की जड़ें हैं इतनी गहरी हैं। आप में से कितने लोग कभी कुंभ मेला में गए हैं, देखा आपने? आप गए हैं कुंभ मेला? हाथ खड़ा कीजिए, वेरी गुड। क्या दिखा था आपको दृश्य वहाँ पे? कितने लोग आते हैं? लाखों लाखों की संख्या में। ये दृश्य मालूम है कहाँ का? ये जगन्नाथपुरी का। लाखों लाखों लोग, कहीं पूरे संसार में ऐसे लोग नहीं आ सकते ना, आध्यात्मिकता के नाम पे। ये हमारी संस्कृति है। नेक्स्ट प्रभु। तो छोटा सा कंपैरिजन करेंगे, समय कम है। वैदिक संस्कृति में सेवा करने की भावना दी जाती है, सेक्रीफाइस करने की भावना दी जाती है, दूसरे के लिए कुछ करना है, त्याग करना है। और आधुनिक समय में इंजॉयमेंट, कैसे मैं दूसरे का शोषण करूं, अपनी खुशी के लिए दूसरे का गला काटने कोई दिक्कत नहीं है। कट थ्रोट कंपटीशन, गला काटो आगे बढ़ो, किसी के सर पे पांव रखो आगे बढ़ो। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन हमें सिखाता है। और जो आध्यात्मिक संस्कृति है गॉड सेंटर्ड है, हमेशा भगवान को केंद्र में रखते हैं। हमारे अपने जो भी हमारे उत्सव हैं, जो भी हमारे कार्य हैं, उसमें भगवान केंद्र में होते हैं। आधुनिक उसमें इस गॉडलेस एथिज्म, नास्तिकता को प्रमोशन दिया जाता है मॉडर्न साइंस के नाम पे। यस, वैदिक संस्कृति इनवर्ड लुकिंग है। हमें सिखाया जाता है कि आत्म अवलोकन कैसे करें, इंट्रोस्पेक्शन कैसे करें, अपने आप से संपर्क ना खोएं। आज का संसार इतना तेज गति से भाग रहा है कि हम भूल गए हम कौन हैं, इसलिए आजकल हर कोई परेशान है। नेक्स्ट, आधुनिक जगत आउटवर्ड लुकिंग है। मेरा क्या स्टेटस है, मेरे पास कौन सा आईफोन है, होना ही चाहिए, चाहे उसके लिए मैं जोन सा मर्जी लोन लूँ, किस्तें भरता रहूँ, परेशान रहूँ, लेकिन दिखावा है, आउटवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट, वैदिक संस्कृति में संस्कार है। संस्कार का मतलब प्यूरिफिकेटरी रिचुअल्स हैं जिसमें हमारा शुद्धिकरण होता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में कोई प्यूरिफिकेटरी राइट्स नहीं है। नेक्स्ट, आपको मालूम है हमारी वैदिक संस्कृति में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अच्छी पॉपुलेशन पैदा कर सकते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें अच्छी गाड़ियां पैदा कर सकते हैं। बोले ठीक है, गाड़ी खराब होगी, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अच्छी गाड़ी हो, ड्राइवर खराब हो तो क्या होगा? इसीलिए आज संसार की समस्या ओवर पॉपुलेशन नहीं है, संसार की समस्या है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे इंप्रूव हो सकती है? वैदिक संस्कारों से। ओके, नेक्स्ट प्लीज। देखिए, ये साउथ इंडिया में श्रीरंगम एक स्थान है। आप गए हैं कोई? श्रीरंगम तमिलनाडु में है, बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है। उस मंदिर के बाहर ही ये शायद ये दिखाना नहीं चाहता क्योंकि पूरा नास्तिकवाद कर सकते हैं। पेरियार एक थे वहाँ के सो कॉल्ड तमिलनाडु के विद्वान थे, वो ऐसा कह रहे हैं मंदिर के बाहर उन्होंने लगाया देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, नथिंग लाइक दैट, यू नो। कितने दुख की बात है। तो अब हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे कि ये जो
प्रभाव पड़ा है, इससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या मालूम है? आपको मालूम है कि आज इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 120 करोड़। कितना हो गया अभी? 140 हो गया। अच्छा 140 करोड़। और इसमें 50% जो पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स हैं। 0 to 24 एज की पॉपुलेशन 50% है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज इंडिया वर्ल्ड की यंगेस्ट कंट्री है। ओके, यानी कि आज पूरे भारत में लगभग 70 करोड़ युवा हैं 24 साल के अंदर अंदर। हरि बोल, है ना। किसी भी देश की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्सेज, उसकी जनता। और युवा, यंगस्टर्स में एनर्जी है। अगर इस एनर्जी को हम सही ढंग से चैनलाइज कर लें, इंडिया पूरे वर्ल्ड को रास्ता दिखा सकता है, दिशा दिखा सकता है कि इंडिया सुपर पावर है। ओके, तो क्या हो रहा है? अगर इन यंगस्टर्स को हमने सही डायरेक्शन नहीं दिखाई, आज आप जानते हैं 45% जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं दे टेक लिकर। 55% of Indian teenagers in metro cities are into drugs. Horrifying figures हैं ये। जय श्री राधा माधव जी की जय। इंडिया में एक दिन में 371 सुसाइड्स होते हैं, यानी कि 15.5 सुसाइड्स पर आवर। जब तक ये प्रोग्राम खत्म हुआ 1 बजे तक 31 लोगों ने सुसाइड कर लिया होगा। ये हालत है। 1 घंटे में 1780 एबॉर्शंस हैं। ये तो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं। यानी इंडिया के पास यूथ पावर है, लेकिन अगर इसको सही डायरेक्शन नहीं दिखाई गई तो पूरा का पूरा काम तमाम हो जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सही दिशा को प्राप्त करें, तभी हम भारत की भी और पूरे विश्व की दशा को सुधार सकते हैं। क्या करना है? दिशा ठीक करके किसको सुधार सकते हैं? दशा को सुधार सकते हैं। अधिकांशतः आज का आधुनिक जीवन दशा को सुधारने में लगा हुआ है कि मेरे पास हर चीज़ लेटेस्ट गैजेट्स होने चाहिए, दिशा जो मर्जी हो। कितना ज़्यादा स्मार्टफोन एडिक्शन है आप सब जानते हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है। आपसे मैं शेयर करता हूँ, आपसे 40-50 साल पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, किसी को चश्मा लगता था तो सब उसको छेड़ते थे, चोखा चश्मे वाला, बेचारा ऑड मैन आउट होता था। आजकल जिस बच्चे को चश्मा नहीं है उसको बेचारे को शर्म आती है। तो हमने अभी, मैंने मिला 5 साल की छोटी सी लड़की होगी, उसने चश्मा लगाया। मैं अरे पिछले टाइम तो चश्मा लगा नहीं हुआ था, कैसे चश्मा लगा लिया? कहते हैं 0 नंबर है। मैंने क्यों लगाया हुआ है? बड़े क्लास में सबको लगा हुआ है, फैशन है। सो कहने का अर्थ क्या है? स्मार्टफोन एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, ड्रग एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, सुसाइड्स, डिप्रेशन केसेस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रभु। सो दीज आर वेरी अलार्मिंग फैक्ट्स। और कारण क्या है कि हम लोग अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो वैदिक संस्कृति के अनुसार नहीं है। तो ये बहुत मनन गहरा विषय है कि हम सब समझें ऐसा क्यों हो रहा है। तो आगे आने वाले मैं कुछ समय में आपसे मैं मुख्यतः 6 कारण की चर्चा करूंगा। 6 मेन रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ इंडियन कल्चर, है ना। ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जानें जिस भारत की स्थिति इतनी अच्छी थी उसकी दुर्गति क्यों हुई। जब हम इन कारणों को पहचानेंगे तो हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात? आ रही है बात समझ में? अगर आ रही है बात समझ में जोर से बोलिए हरि बोल। दोनों हाथ खड़े करके हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। थैंक यू। तो पहला कारण है, नेक्स्ट प्रभु, नेक्स्ट।
ये सब हम देखते हैं, हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, कैरियर चॉइस के लिए कितने लोग परेशान हैं, फैशन सेंटर्ड कल्चर है। पहला कारण हमारी संस्कृति का पतन होने का फॉल डाउन ऑफ ब्राह्मणास। आप में से कितने लोगों ने वर्णाश्रम सुना है? वर्णाश्रम क्या होता है वर्णाश्रम, समझाएंगे? यस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और क्या होता है वर्णाश्रम में? बताया इन्होंने, और कोई बताना चाहेगा? यौवन, कुमार, गुड गुड, ट्राइंग। और कुछ? यस, फ्यूचर को ठीक कर सकती है। माइक पे बोलिए। एक कल्चराइज्ड वे जिसमें लोगों के पास एक पाथ वे होता है जो उनके पूर्वज भी फॉलो करते थे, जिसे वो भी फॉलो करेंगे तो वो सबका भला होगा एट लास्ट। हाँ, और पूर्वज किसको फॉलो करते थे? वर्णाश्रम धर्म को, मतलब एक एज तक बच्चा ब्रह्मचारी रहेगा, उसके बाद फिर उसकी मैरिज होगी, उसके बाद वो कुछ टाइम तक वहाँ रहेगा, फिर वो वरना दूसरा वन में जाएगा, उसके बाद वेरी गुड। वर्णाश्रम होता है वर्ण और आश्रम। वर्ण मतलब आपकी मटेरियल क्वालिफिकेशंस, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य और शूद्र हो। अभी आज के में इसको जातिवाद के नाम से जानते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति में जातिवाद नहीं था। जो आपके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं, क्षत्रिय के गुण हैं, वैश्य के गुण हैं या शूद्र के गुण हैं। ब्राह्मण मीन्स ऐसे लोग जो एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास, है ना। हर सोसाइटी में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एडवाइस दे सकते हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो ब्राह्मण है। ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, जन्म के अनुसार नहीं है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उसके अंदर कैसी क्वालिटीज़ हैं, वो कैसे कर्म करते हैं, उसके अनुसार वो तो ब्राह्मण बनेगा। क्षत्रिय मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओके। वैश्य मतलब कि व्यापारी गण, मर्केंटाइल क्लास। शूद्र मतलब जो सर्विस करते हैं वो शूद्र, है ना। ये गुणों और कर्मों के अनुसार है, जाति के अनुसार नहीं है। इसका सही ढंग से समझ नहीं है तो आजकल वो क्या बन गया? जातिवाद के नाम से हो गया, जिसमें कि एक जात दूसरी जाति का शोषण कर रही है। ऐसा वैदिक शास्त्रों में नहीं है। तो एक पूरे समाज की तुलना एक शरीर से की जाती है। उसमें ब्राह्मण की तुलना सर से की जाती है, क्योंकि सर में दिमाग है, वो सबको दिशा दिखाता है। क्षत्रियों की तुलना बाजुओं से की जाती है, बाजुओं में उसके हाथ में तलवार है, वो शासन करता है। वैश्य की तुलना पेट से की जाती है, वो खेती करेगा, बिजनेस करेगा, धन कमाएगा, सबका पेट भरेगा। और शूद्र की तुलना पाँव से की जाती है, वो सबकी सेवा करेगा। तो हुआ क्या? वैदिक संस्कृति का पतन कैसे शुरू हुआ? ब्राह्मण लोगों को अहंकार हो गया कि हम सर्वश्रेष्ठ जाति हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से वो दूषित हुए, उनका पतन हुआ। अगर किसी सोसाइटी किसी व्यक्ति का सर ही काट दिया जाए, बिना हाथ पैर के कोई व्यक्ति रह सकता है? बिना सर के कोई व्यक्ति रह सकता है? नहीं। तो ब्राह्मण ही जब पतन हो गए तो पूरे समाज का पतन हो गया, है ना। ब्राह्मण क्या करते थे? वैदिक शास्त्रों के सार को पढ़ के, वैदिक शास्त्रों को पढ़ के पूरे समाज का उसका मार्गदर्शन करते थे। जब ब्राह्मण का पतन हो गया तो पूरा समाज वैदिक ज्ञान से परे हो गया, है ना? और हर कोई अपनी मनमानी करनी शुरू कर दे। और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है तभी क्या है? वैदिक शास्त्रों के अनुसार नहीं है। आज की जो लर्निंग है, इट्स ओनली मेंट फॉर अर्निंग। हम लोग क्यों डिग्री इकट्ठी कर रहे हैं? अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए, बस। दो फायदे हैं डिग्री के अच्छी लड़की से विवाह हो जाएगा, कोई लड़का पढ़ा लिखा है, हाँ जी पढ़ा लिखा है, डिग्री है, और नौकरी, हाँ जी नौकरी भी है, तो मिल जाएगा काम, बढ़िया। इसके बाद डिग्री कहाँ है मालूम नहीं हमें, क्या हमने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री, शिग्नोमेट्री, जाई, फाई, थीटा, मीटा, कभी काम आया आपको? कोई काम नहीं आया। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्या क्या घोटे नहीं मारे इक्वेशंस के, सब भूल जाते हैं खाली एक डिग्री कमाने के लिए। ठीक है, ये एजुकेशन का मतलब नहीं होता। एजुकेशन का मतलब होता है मेरे चरित्र का निर्माण, हृदय में परिवर्तन,
हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आज की जो एजुकेशन है केवल क्या है, इंफॉर्मेशन। नॉलेज इज नॉट इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज मेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे जब ब्राह्मणों का पतन हुआ तो जो शिक्षक वर्ग था जिसको शिक्षा देनी चाहिए थी सही, वो सही शिक्षा नहीं दे पाए, तो इसलिए पूरे समाज का पतन होना शुरू हो गया। ये पहला कारण। दूसरा, उसके बाद जो थोड़ा बहुत संस्कृति बचा, भारत पे समय समय पे आक्रमण होते रहे और मुगल्स के आक्रमण आप जानते हैं, और इन्होंने आके बहुत अत्याचार किया। मोहम्मद गजनी भी आए, 17 बारी सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, मंदिर तोड़े गए, ग्रंथों को जला दिया गया, ब्राह्मणों की हत्या की गई, गायों की हत्या की गई, गाय का मांस खाना शुरू हो गया, पाप बढ़ गए। तो ये मुगल इन्वेजन से हुआ। पूरा का पूरा खान पान लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में लाया गया। तो पूरा का पूरा हमारा जीवन शैली, खान पान सब बदलाया गया। इसके कारण हमारे संस्कृति में कुछ पतन हुआ। तीसरा, ब्रिटिश इन्वेजन। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो आए, 150 वर्षों तक शासन करने के बाद भी वो भारत में कुछ परिवर्तन नहीं ला पाए। फिर उन्होंने चर्चा की ऐसा क्यों, और उन्होंने पाया कि भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर हमने भारत को गुलाम बनाना है तो भारतीयों का अपनी संस्कृति से विश्वास हटाना होगा। इसीलिए इन्होंने अपने यहाँ से कुछ विद्वानों को भेजा। उन विद्वानों को कहते थे इंडोलॉजिस्ट, और उसमें जैसे एक इंडोलॉजिस्ट थे मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ा, और वैदिक शास्त्रों को पढ़ने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि वैदिक शास्त्र बहुत हिंसक हैं और वैदिक शास्त्र बहुत प्रिमिटिव हैं, मतलब कि ये आधुनिक समाज के लिए नहीं हैं, और हमारा जो पाश्चात्य देश का संस्कृति है बहुत बड़ी है। और उन्होंने हमारी वैदिक शास्त्रों में रामायण, महाभारत इत्यादि को क्या नाम दिया? माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ मिथ। मिथ क्या होता है? फिक्शनल, काल्पनिक। यानी कि रामायण, महाभारत ये सब काल्पनिक हैं। और अभी तक हम इस, जैसे कहते हैं ना, वहम से, इस भ्रम से ऊपर नहीं उठे हैं। अभी भी कई जगह आता है हिंदू माइथोलॉजी। नथिंग कॉल्ड माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मीन दैट विच इज नॉट ट्रूथ, इट्स जस्ट ए फिक्शनल। तो ये सब मैक्स मुलर जी की देन थी। और उन्होंने कहा आर्यन थ्योरी। कितने लोग आप आर्यन थ्योरी जानते हैं? नहीं पढ़ी आपने आर्यन थ्योरी? बहुत सौभाग्यशाली हैं, वेरी गुड। आर्यन थ्योरी में बताते हैं कि जो भारत का इतिहास है ये तो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ है। हम ब्रिटिशर्स आए हैं आपको ऊपर उठाने के लिए, है ना। हम आपको जेंटलमैन बना देंगे, आप तो आदिवासी लोग, रूढ़िवादी लोग हो। तो इस प्रकार से बहुत डिटेल में हम आपको थोड़ा साथ में बता रहे हैं। और बताया कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इज सुपीरियर। सारे के सारे संस्कृत बुक बहुत प्रिमिटिव हैं। और ऐसा कहा, इस प्रकार से इतना हमें कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया कि भारतीयों को अपनी ही संस्कृति पे शर्म आने लगे। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया, और ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अभी तक हमारे जहन में है। आज किसी व्यक्ति को अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो सोचता है मेरी समाज में कोई कदर नहीं है। बचपन से ही हम छोटे बच्चे को इंग्लिश उसके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश है, जानता है तो उसका कैरियर, इसका फ्यूचर, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। इसी प्रकार से मैकली ने पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया। और अभी तक, अब कुछ हमारी सरकार स्टेप्स ले रही है शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए, अभी तक उसका प्रभाव था। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे पास एक दूसरा प्रेजेंटेशन है, किस प्रकार से एनसीईआरटी बुक्स को टेम्पर किया गया, सच्चाई को छुपाया गया, गलत तथ्यों को सामने रखा गया। बचपन से ही एक बच्चे का वैदिक संस्कृति से विश्वास खत्म कर दिया। और मैकली का कहना था कि आप इंग्लैंड के किसी लाइब्रेरी में जाइए, उसकी शेल्फ में
अगर किंडरगार्टन क्लास की, केजी क्लास की जो किताब है, उसका ज्ञान वैदिक शास्त्रों के ज्ञान से कहीं ज्यादा है। आप सोचिए, इतना इंसल्टिंग रिमार्क्स उन्होंने वैदिक शास्त्रों के लिए दिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जब तक किसी को इंग्लिश नहीं आएगी नौकरी नहीं मिलेगी, और हमने ऐसे लोगों को तैयार करना है दिखने में भारतीय हो लेकिन हृदय से कौन हो, अंग्रेज। और ऐसा उन्होंने करने में सफल भी हुए। उसके बाद चौथा कारण आता है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं भ्रांति। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत में किसी भी स्कूल में आप प्रमाणिक तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकते। ये भारत में ही है। आज विश्व के सभी यूनिवर्सिटीज में रिलीजन के ऊपर पीएचडी अलाउड है, केवल भारत को छोड़ के, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। मदरसों में कुरान पढ़ाई जा सकती है, क्रिश्चियन स्कूल में बाइबल पढ़ाई जा सकती है, लेकिन किसी और स्कूल में आप भगवत गीता पढ़ाएंगे तो बहुत ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि आप सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये क्या है? बाकी आप पूरे विश्व के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में रिलीजन पे पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन भारत में बाकी सब विषयों में कर लेंगे, रिलीजन के ऊपर पीएचडी अलाउड नहीं है। अब कुछ बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। तो सेक्युलरिज्म के नाम पे हमारी संस्कृति का बहुत पतन हुआ। पांचवा, पहला क्या था? ब्राह्मणों का पतन। दूसरा मुगल। तीसरा ब्रिटिश। चौथा सेक्युलरिज्म। पांचवा चीप अप्रोच। धर्म के नाम पे बहुत जैसे कहते हैं नकली गुरु आ गए। आप रोजमर्रा देखते रहते हैं अखबारों में नकली गुरुओं का भांडा फोड़। लोग अपने आप को भगवान बता रहे हैं। शास्त्रों का उल्टी सीधे उसका इंटरप्रिटेशन आ रहा है। अपनी भगवत गीता लोग निकाल रहे हैं, है ना। झूठे धर्म, झूठे गुरु, झूठे भगवान। जब ऐसा होता है तो एक आम व्यक्ति बोलता है छोड़ो यार इस सबको, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, ये धर्म के चक्कर में मैंने पढ़ना ही नहीं है। तो लोगों का संस्कृति से और भी विश्वास खत्म हो गया। आप किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, वहाँ कई बार ऐसे हमें ब्राह्मण मिल जाते हैं, पंडित मिल जाते हैं जो हमसे ज़बरदस्ती दान लेते हैं, तो हमारा हृदय और ख़राब हो जाता है। यार छोड़ो यार, यहाँ जाना ही नहीं, यहाँ इतना दिखावा है, कोई सच्चाई नहीं है। कुछ कारण पूछो ये रिचुअल क्यों है, तो किसी को पता नहीं। तो ये सब चीप अप्रोच के कारण भी जो थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो बोले मैंने चक्रों में फंसना नहीं है, और वो नास्तिकवाद की तरफ आगे बढ़ता है ना। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि हम इसको नहीं कर पाए। और जो छठा कारण है वो है ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्ट। जो गोरे लोगों ने कहा वो बिल्कुल सत्य है। जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं उस पर हमें संशय है, लेकिन किसी विदेशी व्यक्ति ने कह दिया उसको हम बड़ा सच मान रहे हैं और उसको पूरा पालन कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलने जा रहे हैं। हमारे शिला प्रभुपाद जी जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो कहानी सुनाया करते थे कि कलकत्ता में एक बारी बहुत ही अकाल पड़ गया, भूखमरी सी थी, तो एक व्यक्ति को सड़क पे कुत्ता मरा हुआ मिला। उससे बोला कैसे धन कमाऊं। उसने उस मरे हुए कुत्ते का मीट किया, बनाया और मीट बेचने लगा। अब कुत्ते का मीट भारत में कौन खाता है? कोई नहीं खाता, कोई ले नहीं रहा था। तो उसको एक आइडिया आया, बोले ये कुत्ता साधारण नहीं था, गोरे साहब का कुत्ता था, गोरे साहब का कुत्ता, उसका मीट है, गोरे साहब के कुत्ते का मीट। सारा मीट बिक गया फटाफट, क्योंकि गोरे साहब का कुत्ता। तो ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्ट, जो बाहर से हमें देखने को मिलता है उसको हम कर रहे हैं, अपना पहनावा, अपना बोलचाल, अपना खान पान। तो इसके कारण क्या है, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इतना सब चर्चा करने का उद्देश्य क्या था? कौन बताएगा अब हमें क्या करना चाहिए? अपने रूट से कनेक्टेड रहना चाहिए। वेरी गुड, हरी बोल, तालियां बजाएंगे बच्चे। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? हैं? राघव, वेरी गुड। और क्या करना चाहिए? कैसे रहेंगे रूट से कनेक्टेड?
रीलर्निंग ऑफ वेदास. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम प्रभु? गौरव जी. वेरी नाइस. बहुत अच्छे. और क्या करना चाहिए? यस, गुरुकुल की स्थापना करनी चाहिए. बचपन से ही उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए. बहुत अच्छे. क्या नाम है आपका? आदित्य. बहुत अच्छे. और क्या करना चाहिए? वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. और किससे इन्फ्लुएंस करना चाहिए? वैदिक संस्कृति से. वेरी गुड. हरि बोल. वेरी गुड. और आपको जान के खुशी होगी, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, इनकी कृपा से आज पूरे विश्व में इस्कॉन के 700 से भी अधिक केंद्र हैं, है ना. अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसे देश में, चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो नास्तिक देश है, लेकिन वहाँ पे भी लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वैदिक शास्त्रों को पढ़ रहे हैं. और इसके साथ साथ जब श्रीला प्रभुपाद जी एक बारी लंदन में गए तो वहाँ के एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या लेकर आए हैं? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, जब आप ब्रिटिशर्स ने भारत पे राज्य किया तो आप भारत के सारे बढ़िया बढ़िया हीरे मोती कोहिनूर के सब हीरे उठा के ले आए, लेकिन असली हीरा आप भूल गए. बोला असली हीरा कौन सा था? बोले वो असली हीरा है भगवत गीता. तो प्रभुपाद जी भगवत गीता लेकर गए विदेश में, और आज पूरे विश्व में लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और अपने जीवन को वैदिक संस्कृति के अनुसार ढालने का प्रयास कर रहे हैं. और हम भारतीयों का विशेष कर्तव्य है, जैसे मैंने बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है और 50% आज पूरे भारत में युवा संख्या लगभग 70 करोड़ है. अगर हम सब मिलकर इस बात को समझें और अपने जीवन में वैदिक संस्कृति को अपनाएं और इसका प्रचार करें तो हम पूरे विश्व का भला कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है. कहीं भी वेदों में हिंदू का नाम नहीं आया. ये पूरा वैदिक संस्कृति मानव समाज के लिए है. तो पूरे मानव समाज का हम असली भला परोपकार तभी कर सकते हैं जब इस वैदिक संस्कृति को हम अपने ढंग में अपने जीवन में अपनाएं और इसका प्रचार करें. ठीक है, तो आप सबका बहुत धन्यवाद. अब आगे आपको बताया जाएगा कैसे हम इस वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित कर सकते हैं. हरे कृष्ण. Hare Krishna. So we are grateful to Prabhuji for such an eye-opening talk. It's crucial for us to know how great our Vedic knowledge is, how great our culture is, and how Vedas are like a manual for human life. And it's very evident, isn't it? As Prabhuji said, most of us have our names derived from the Vedas, right? How many of you think that your names are derived from the Vedas? Okay, what's your name? Krishna. Okay, second one? Arjun. Krishna and Arjun, wow. And third? Sham. Krishna, Arjun, Sham. And? Sankalp. And last one? Parikshit. So we see how much names resemble to the Vedas. So next, as our spiritual journey continues, we are honored to present yet another enlightening discourse by His Holiness Bhakti Brihad Bhagavad Swami Maharaj. It's an honor to introduce a luminary whose wisdom and devotion have touched the lives of countless souls. Maharaji was former educationist who joined ISKCON in Durban, South Africa in 1983. He founded in the Bhakti Vedanta College of Education and Culture in Durban. Then he served as a president of ISKCON Durban and co-president of ISKCON Vrindavan from 2001 to 2004. And he currently serves as director of ISKCON Leadership and Education and Development System, which trains leaders and preachers in India. Maharaji presently travels widely preaching and teaching Krishna Consciousness in ISKCON centers, yoga centers, schools and university. And we are very fortunate today that he's here with us today. So everyone, let us open our hearts and minds and put our hands together to receive the profound wisdom and blessing that he imparts today. Thank you. Hare Krishna. We need some volume on this. I'm just testing the sound. Few seconds. Hare Krishna, Hare Krishna. We need more volume. Hare Krishna. Is that okay? You can hear me? Everyone? Yes.
So we thank His Grace Rukmini Krishna Prabhu for enlightening us so wonderfully with facts and figures and also application in various ways. And when he was speaking, he reminded me of when the British were in India. And I'm a product of the British rule in India because my forefathers were the first ones in 1820 to be taken by the British as slaves from Tamil Nadu and Kerala. And the first of my forefathers that came in 1820 landed in Durban in South Africa. That's how they began their colonies or colonization all over the world. So I'm 5th generation, born in Durban in South Africa, coming from South Indian roots. So having said that, I'll just give a slight experience. About 10 years ago, I was distributing our Vedic literatures, which includes Bhagavad-gita, as it is, in the main streets of a capital city called Nairobi in Kenya, which is in East Africa. So naturally, many African people approached me and I approached them, and what do you have? What do you have to offer? And so forth. And I was distributing Bhagavad-gitas and especially another book that we have called Science of Self-Realization. So after about an hour or so, I could see in the near distance, about maybe 100 meters away, one high-level Christian, Catholic minister or priest was approaching me. And when he actually reached me, then I realized he's an archbishop and he's African-bodied. So then you get the bishop, archbishop, then you get cardinals in the Roman Catholic tradition, and there's one pope. So he was very high up there in his sort of designation of religion. And he approached me and he said that I've seen you from my window because I have my residence here and I'm the Archbishop of Nairobi. And he started speaking to me for about 45 minutes, preaching to me about the Roman Catholic Church and what they do and about Christianity. So I heard him for 45 minutes, and at the end he asked me whether I have any questions. He was probably in his I'm going to be 64 years of age now, but I was 55 or something, and he was in his mid-60s. He was 10 years older than me, like an elder. Yeah. So I said I have a few questions after he preached to me, feeling that I was ignorant and why am I sort of converting the African people with our books. Yeah. So the first question I asked him is that, do you have a family? He said, yes, I'm a grandfather. I said, well, I'm a sannyasi and I don't have a family. So that's one difference between you and me. Then I said, I have more questions to ask you. So I asked the next question. I said, do you have your own home? He said, yes, I have my own home. I'm a grandfather, but then the Vatican in Rome, they
give us facilities to stay. But I own a home because I'm a grandfather. I said, but I don't have a home. The sky is my roof and the arm is my pillow, and I travel all over the world. So I said, that's the second difference between you and me. You have possessions, I don't have. See? And then I asked him, I said, I have more questions for you. He thought I would ask about theology, religion, but I didn't. So I said, the third question I have is that, are you a vegetarian? He said, no. I said, well, I am a vegetarian. I said, that's the third difference between you and me. See? So I said, now I have my fourth question. By this time he was a little bit wiser, because he realized my questions were not what he was preaching to me. You know. So I said, my fourth question is very simple. Can you come and live with me for 1 week? And after you live with me for 1 week, I will come and live with you for 1 week. And let's see the difference in how you live your life and how I live my life. So by this time he was a little quiet. See? And I said, because your answer is sort of silent to me, it acknowledges that you won't be able to live with me for 1 week, and at the same time you won't invite me to live with you for 1 week. So I said, that's the fourth difference between you and me, that you are not open to invite me, but you're meeting me on the street, but I am open to invite you. So I said, I have a fifth question. And the fifth question I asked him is that, now you tell me who is living the scriptures. Whether it's the Bible, whether it's the Quran, or whether it's the Torah, or whether it's the Bhagavad-gita, which is the essence of all the Vedas, which Rukmini Krishna Prabhu wonderfully brought out the meaning of Veda at the beginning of his talk. See? So in Bhagavad Gita, in the beginning verses, there's a word called Raja Vachanam Abravit. So Vachanam Abravit means a politician. And that is Duryodhana who's saying this. So Duryodhana only speaks words, but there's no substance, there's no tangible meaning to them. See? So then I asked, I was remembering that verse in Bhagavad Gita, and I asked this Archbishop, so what's your value of your speaking to me when I'm living the Bible more than you do? See? And that's another downfall in Bharat Bhumi, which was later called India, Indianized by the Western world. See? So one can look internally for the moral, social and ethical, spiritual values, not mundane values, from Bhagavad Gita as it is, and we have those books available. Or some initialization books that tells you how to practically understand the Bhagavad Gita, a book called Science of Self-Realization. Can you get me 2 copies of this, one each? Like that. So it's important that we just do not speak, but we have a reference point that is Aporashaya, which is beyond defects. If people just speak with defects, then what you follow when they speak will not have a substantial, as Rukmini Krishna Prabhu said,
an internal transformation of the heart. It is just external. And with external you're going to get nowhere. See? We have to change from inside out. We don't have to just stay out. See? So therefore, transcendental knowledge is apurusha. It's beyond any defects. And if you, all of you have money, even if you're a student, right? So just invest in this nice book, Science of Self-Realization, which will prepare your consciousness to enter into the mystical, devotional spirit of the Bhagavad-gita as it is. So these two books are fundamental. So when I completed my interaction with that cardinal, he sort of acknowledged that I cannot join you and become one of you, because definitely the differences are too vast. So I told him, but I want to impart something to you, and I gave him this book, Science of Self-Realization. And I thought my mission is accomplished. So later on, this same Archbishop was invited by the president, of the Kenya, the country of Kenya, and he was invited through the mayor of Nairobi, who was another African man. And he was speaking on television, because he was an influential man for votes for them. Roman Catholics are very influential all over the world for votes. Yeah. And when he was speaking, and somebody told me that you have to see this clip on the television, that he's speaking something from Prabhupada's books. So they said, yeah, but I gave him the Science of Self-Realization. And he's an archbishop, archbishop, then cardinal, then one pope. And when I saw the clip, he was speaking about the soul and you're not the body. And where did he get it from? From this book. So I knew, now Krishna has sent a sign that my mission is definitely having effect of giving that book. So it's important to not just speak about the scriptures. It's important to live the scripture. And all of you are very young at heart and also young in body. So we invite you, I'm sure you have their contact details, right? All of them. And we have, as Rukmini Krishna Prabhu was saying earlier on about Varna Ashram, and the Brahmachari Ashram means that you can avail yourself voluntarily to come to us for some training for 3 days, 4 days, during your holidays and so forth. I'm sure that can be arranged. Yeah. Not all of you may come because you may be busy in your lives in some way or the other, but take time off and get a spiritual so-called sabbatical. Take time off and come and associate with the sadhus, the saintly persons here, of how to live the scripture. Of how to live the scripture. You can put this on the platform there. Yeah. And why should you do this? Because in Bhagavad Gita, in several verses, which I'll just paraphrase, that everyone is looking for happiness, but you're not going to find it unless you are internally peaceful. The foundation or basis of happiness is called peace. And I can quote several verses, but time will not allow too much and to expand on them. Yeah.
So internally, if you're not peaceful, then you'll never be happy. You'll just put on a show of so-called external happiness by bringing pain to others. And part of your happiness is to see others in pain and in distress, which is not so nice, because you're internally not peaceful. Let others suffer so that I can be happy. That's really demoniac. You're not even considered a human being if one is like that. See? So all you need to do is connect to the saintly persons here. We have a few of them sitting here on my right. One is Nam Prema. Stand up. He's an amazing sadhu. He's the co-president here. Let's chant for Nam Prema together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare. And is Nam Prema is another co-president. Stand up. This is Akrura Nandan Prabhu, and he's a very, very long time resident here, practically 30 years or so. Yeah, over 20 years or so. And he's the co-president, so they're the heads, the spiritual heads of this nice ashram and temple here. And they welcome you. Like, come and spend a few days. They have nice facilities. Of course, maybe our facilities could improve also. We will do that to accommodate you as comfortable as possible. You just come for a few days, spend time with them and the other, you could say, ashramites, sadhus in the ashram. There's about 25 of them altogether. And you will find this internal peace upon which the foundation of peace you can build upon a genuine eternal happiness. And nobody can touch you internally, no matter what happens externally. Now, do we have microphones here? Microphones? So like I said, speaking about the scriptures is not sufficient. Living the scriptures as our guidebooks and guidance is most important. Otherwise anybody can concoct how you should live. But it must come from the Bhagavad-gita as it is. So, where's the microphones? One, and there's another one? Okay. Now, you can ask me any question. Whether it's politics, whether it's mathematics, or whether it's fighting, war, or whether it's nuclear warheads, or whether it's science, or whether it's mundane religion, or sociology. You can ask me any question. Raise your hand. Yes. And please tell me how many more minutes I have. Okay. What's Hare your name? Krishna. I am Devaraj. You can stand up. Yeah, thank you. And you can stand sideways so that that camera gets you. And that I am camera- Devaraj. You are? I am Devaraj. Devaraju. Yes. Nice names, eh? Deva means the demigods, and Raju means prince. Okay, tell us. Yes. My question is, if you are team leader or if you are office in charge, You are a team leader. if any, yes. Where? For example, if a small department like actually I am working in Tata Memorial Center. At your work, you're a team leader. Yeah, I am working in New Chandigarh Tata Memorial Center. I'm focused. Now, what's Yes. your question? My question is that if you are anybody is a team leader, so without getting angry, how to do the work with our colleagues? Nice. Nice question. You can sit down. Thank you very Thank much, Devraju. Yeah. In other words, in the material world, you're bound to run into difficulties. It is designed for that. Your body and mind and intelligence is designed for suffering.
Your body, mind and intelligence is designed for incompatibility. Your body and mind and intelligence is designed to land you in trouble. You cannot win with the subtle and gross body. See? Now that also happens to us, because I'm also wearing the dress of a subtle and gross body. See? So how do I immunize myself when I'm meeting people out there? Because I just don't live in an ashram amongst devotees. I travel and I meet so many people, including heads of state, including soon, either maybe this year in November, or if my time allows, I'll be doing a course as selected values in Vedic culture in IIT Mandi in Himachal Pradesh, to undergraduates, to postgraduates and PhD students. I'm going to teach there. See? So now, the same questions was asked with me by a PhD student in IIT Kanpur. So now, the answer I touched on internally, that if you're not internally peaceful, you'll definitely react externally, even at work. See? So our process is not to overcome the lower nature with the higher nature in terms of being calm, being internally peaceful and not getting angry. That's your question, basically. Our internal state should give us an immunity externally, not to be moved by other person's external actions towards us. So how to immunize yourself before you go out and act as your mother, father, husband, wife, son or daughter, or team leader, or prime minister of the country, or whatever role you have. So how to immunize yourself daily in the morning before you go out to your college, university or place of work, or your business that you may own. Very simple. Very simple. There's a verse in Bhagavad-gita. Bhoktaram yagya tapasam sarva loke maheshwaram suridam sarva bhutanam gyatva mam shantim richati. So Bhoktaram yagya tapasam means that when one, even in a very slight or a slight glimpse way, recognizes that Krishna is the beneficiary of all our sacrifices and hard work, sarve loke maheshwaram, then that leads to another realization where you'll realize that Sri Krishna is the controller and owner of everything. He even owns me and controls me, which is a nice thing, rather being controlled by others in the material world. And then when that happens as the second feature of the realization, Suridam Sarva Bhutanam, then you'll realize that Krishna is your best friend, Suridam, and your ever eternal well-wisher. Then peace enters by its own mercy and by its own, you could say, by its own mercy and by its own free will, it enters your heart. Gyatva mam shantim. Shanti means peace. When you receive that in your heart, nothing can touch you for the day. But how to invite that internal peaceful situation in your heart so that externally you are not agitated by other person's actions and activities and become angry? You have to immunize yourself in the morning. And the only immunity you can take to enter into your consciousness and heart is the mercy, blessings and protection of Sri Krishna. By chanting 2 words at a time after me, Hare Krishna,
No. Are you hungry? Louder. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So give the microphone to Devraj. So what are you going to follow from today? I understood that. No, understanding is one thing. We don't want gyan. We want practicality from your understanding. How are you going to practically apply the answer from Bhagavad-gita? I quote. What are you going to do from today or tomorrow morning? Hare Krishna, Hare Krishna. Loudly, Krishna, loudly. Don't Hare chant Krishna, with him. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nice, you got the Rama right. Also. Okay. Now, Devraju, right? Yeah. Now, for how many minutes you're going to chant to immunize yourself in the morning? Sir, regularly I'm doing meditation, nearly 20 minutes to 30 minutes morning every Okay, day. no. You see, 20 to 30 minutes is like fluctuating. You have to commit because you're meeting Krishna when you chant Hare Krishna. You cannot play around with Krishna. Look, I don't feel like being with you today, so I won't chant. Today I feel like being with you today. Or today I feel like being with you for 1 hour. But tomorrow, but the next morning when you wake up, well, and I'm not in the mood to be with Krishna, so I won't chant at all. That's not nice. That's not how you treat Krishna. You have to commit to please Krishna, because Krishna loves to be with you, but you have to be likable to also be with him. So what's it? 15 minutes or 20 minutes each morning? What's it? 20 minutes. Thank you. Let's chant for him. Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Devaraj, Raju, right? Devaraj. Yeah. So he is committed to chant 20 minutes of the Hare Krishna Maha Mantra every morning before he goes to work. Or on the weekends, if he doesn't work, he'll still continue to meet Krishna in the morning, just to give him that immunity internally of a sense of preliminary peace, of a sense of beginning peace. So when you feel that, then you want to increase your association with Krishna in the morning, and you talk to one of these sadhus in the temple of how to do that. It will work, guaranteed. Thank you very much for your nice question. This is a sign that it's the end. Yes or no? Oh, the co-president is giving. He has his hand up, he's enthusiastic on this side. Oh, there's many hands up, so I don't know what to do. You'll have to guide me. There's so many hands up. This is called Atato Brahma Jigyasa. It's our process. Give him the microphone there. Hare Krishna Prabhuji. You can call me Maharaj. Say Maharaj. Hare Krishna Maharaj, say. Hare Krishna Maharaj. I'm a sannyasi. Usually I bring one stick, danda. Today I didn't bring it because of, oh, he's got a stick. I didn't bring it. What's your name? Sankalp. Sankalp. Nice. He's a person who keeps vows. Doesn't break any vow. Hopefully. Maharaj, I have a problem of procrastination. I have a problem of delaying tasks. Then you got to live up to your name. I can see you are naughty in a nice way. You are naughty in a nice way because he is very humble. He is admitting, look, I cannot live up to my name. So what's procrastination? Explain that to me. Give me an example of your procrastination.
Procrastination means current enjoyment. Maybe it be watching TV, enjoying movies. Enjoyment Means giving priority to not necessary tasks over necessary tasks. Everyone knows there's no enjoyment in the material world. It is just wasting time. Yes or no? Do you agree? Yes. You know. Yes. So not only Sankalpa is procrastinating, everyone is doing that. Wasting time. So come to the mandir and utilize your time in a valuable way that's to your benefit and to your eternal benefit. Now, what's your question? How to get overcome procrastination? You come here and you see these sadhus, and they'll engage you in different services, and your mind will tell you before you come here, don't go there. Not you. You are not the mind. You are not the mind. You are not the mind. You are the soul. Yes or no? You are the Atma. You are not the mind. The mind's function is to be naughty. The mind's nature is to be crazy. And the mind ultimately is the sum total of all madness. And that will influence you not to come here. Because we are influenced by the mind most of the time. Everyone in the material world is on the mental platform. And the mind will tell you, Sankalpa, that Maharaj is telling you to come here, be careful. Because you may change. You can't watch the thing anymore that you're watching every day. That's the mind influencing you. But you are not the mind, you are the soul. And the most fortunate thing for you, Sankalpa, today is that somehow the mind did not influence you to say, don't come here. You came. And that's the opening doors to the spiritual world for you. Now, Sankalpa, before your mind tells you to do anything else, I have a question. You ready? Yes. Simple question. When are you coming again here to meet and associate with the sadhus? When are you coming? Next Sunday. Nice. It's a start. What time will you come next Sunday? In morning around 9 to 10. Oh, that's breakfast time. You come at the right time. That's great. So you come at 9 o'clock next Sunday and make sure you come hungry. Is that okay? Yes, Maharaj. Yes or no? Yes, Maharaj. What's your favorite? Like sabji, what's your favorite dish? What's your favorite food? Not that non-veg, not that. I don't eat. Huh? I don't eat non-veg. Oh, he's a vegetarian. Jai. So, what's your favorite vegetarian food? Mushrooms. We don't take that one. Paneer. Paneer. What sadhu you know here? Which one of our sadhus you know? Name in the temple. Do you know anyone? No, not by name. Okay, not by name. Come here. Now can you see, is a little big.
he'll teach you how to eat more paneer. Can you say? His name is Vaishnava Priya Gauranga. So you remember the name Vaishnava Priya Gauranga. If you forget the name, you come to the temple and you ask for one person. I want to see the temple commander. What's the name? Position? Temple? Commander. Yeah, nothing goes past him here. Come this side. This is Vaishnava Priya Gauranga. Come, son. So this is, can you see his size? He knows about eating paneer. Now Vaishnava Priya Gauranga, let's give him a benediction. He's coming hungry, and make sure you give him the most delicious paneer sabji he ever ate in his life. And what happens to him? The mind will not influence him, and the mind will not influence him, and he'll feel, maybe I should stay here for more paneer. Can you do this next Sunday? So you make sure you take his phone number, address and so forth, and you phone him. You stay in Chandigarh? Yes. How long it takes you from home to here? Around 1 hour. Okay. So you make sure you phone him at 7 o'clock before he leaves home, and you say, everything okay? Don't eat any breakfast? Are you on your way? You make sure you check on him, because we care for him. And the paneer sabji. Make sure others don't finish the paneer sabji. So make sure for next week, Sunday morning for breakfast, there's paneer sabji for everyone. But you can come a little earlier next week Sunday. You can also come at 8 o'clock, because there's a nice class also going on, if you can. And earlier than that, at 7:15, we have beautiful DT darshan. So you decide. But make sure you're on time for the paneer sabji at 9 at least. We okay, Sankalp? Yes, Maharaj. Yes. Is it too overwhelming for you? One wave after another of Krishna consciousness. It's a very nice thing. Don't worry about the mind. The mind is mad, not you. Is that okay? Yes, Maharaj. You don't want to sit down and give the microphone to us, or? Sankalpa, thank you very much. If you have a question, raise your hand high. Now tell them, ask them, what do I do? Ask them, this organizers. What do I have to do? Hare Krishna. How many hands are up? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, So 13, 14, 15. 15, yeah. So 15 hands up at 15 questions multiplied by 10 minutes. At least 10 minutes, because I interact with the questioner and I get more out of him. And we settled him practically of how to apply Krishna consciousness. So what do I do? What's the nature of the program? What's after this for them? After this we have a drama on mind. Oh, that drama for the mind is very important for you. Okay. So there's a drama on the mind, and that may answer some of the questions, 15 questions. And after that? And then we have registration for the courses. Registration for courses, and then? Then we have Hare Krishna Mahamantra. Rock. Hare Krishna Mahamantra, and then? Then Prasad. What time is Prasad? It was supposed to be 1:30, but no issue. How many of you are hungry? Raise your hand. Please be honest. I'm also hungry. Now you have to cut short the program. They're hungry, you know. Because if I ask the next question, they may ask me, when is Prasad? Then I'm in trouble. Okay, so I'll make myself available after Prasadam right here in the temple room. Is that okay? So if you have questions to ask me then, and that will be like around, I would say safely after you have nicely honored. What's the menu?
Menu is not filling the belly. No. I want the menu. Samosa and gulab jamun. Only one samosa and one gulab jamun. Yes, right now. Sorry. Paneer sabji will be in the next. Next time. Next time, full feast. Okay, so there's a snack, right? Of samosa and gulab jamun. I thought they'll give you a big feast. Sorry, I forgot. They have this only snack. Okay, good. So after the samosa and gulab jamun snack, how many samosas for each one? One, but if they ask, we'll provide one also. One more. You don't have money? No issue. Whatever they will. You have more than one samosa? Yeah, we have one. Sufficient. Because some of them are hungry. Yeah. And more than one gulab jamun too, right? Yes. Okay. So the next part of the program will take what, 1 hour or so? Half an hour. For the drama and everything? Drama half an hour, then kirtan. Yeah, 1 hour. No, 1 hour and then kirtan and then there's prasad. So I'll come back here. Now is 1 o'clock. I'll come and join you again if you have any questions. After taking that one samosa and gulab jamun. Right? So what time you'd like me to come back? Like after the drama, some kirtan and samosa and gulab jamun? And what time should I come back? Even if some of you have to leave, that's fine. If some of you want to stay after taking some prasad, what time should I come back here? 2 o'clock. Is 1 hour fine? So I'll come back at 2 o'clock. And there's 15 questions or so. Even if there's few, that's fine. I'm available. Even if there's even the 15 persons who want to ask questions, that's also fine. I'm available to be at your service. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Bharat Bhumi ki, not India, Bharat Bhumi. Hare Krishna. So we would like to thank Maharaj Ji for sharing such a divine wisdom with us today. So many of the profound teachings on our inner peace and the incredible life lessons. He told us about the importance of Hare Krishna Mahamantra, and a beautiful solution for procrastination is that we need to take a sankalpa. How many of you can raise your hands, will take a sankalpa for procrastination? How many of you are going to restrict your social media after this? Okay, I see few hands. Okay, any sankalpa? Anyone would like to share? What sankalpa will you take? Yes? Okay, he's saying he will chant and stop procrastinating. That's what happens when you associate with the sadhus. So now moving on to the next part. अब आप सभी को एक ड्रामा दिखाया जाएगा and its name is very interesting. It's me and the mind, जिसमें आपको अपने मन की कहानी बताई जाएगी. Sounds interesting, right? भगवद गीता में चैप्टर 6 में 6 वर्स में भगवान कृष्ण कहते हैं बंधुरात्म मनस्तस्य येनात्मात्मना जिता आत्मानस्तु शत्रुत्वे वर्ते तत्मैव शत्रुवत्. इसका मतलब क्या है? For him who has conquered the mind is best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. This is something that we realize at every moment in our lives. So आप उत्साहपूर्वक ready रहिए इस ड्रामे का आनंद लेने के लिए. And now I request our drama team to be ready for the act and be on the stage. Thank you. Have a big round of applause, everyone.
No, 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 no.
कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid, but violence likes me. I can't avoid.
Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. हरे कृष्णा। तो हम धन्यवाद देंगे ड्रामा टीम का एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था, अभी हमारे हाथ में है कि हमें अपने माइंड को फ्रेंड बनाना है या एनिमे बनाना है। अगर हम फ्रेंड बनाते हैं तो क्या होगा? इट्स लाइक वी विल ऑलवेज बी हैप्पी। बाय द वे, क्या आप ये कह सकते हैं कि आप हैप्पी हैं? आर यू हैप्पी? यस। बट क्या ये कोई ऐसा कह सकता है कि वो हमेशा ही खुश रहता है? दैट ही इज़ ऑलवेज हैप्पी एंड कभी दुख होता ही नहीं है? एनीवन? ओके, नो वन कैन से। एंड एटलीस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि हर स्टेप पे दुख आता है, वी नो दैट। और क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं दैट हु एम आई, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ, या फिर डज गॉड एग्जिस्ट? यू कैन रेज योर हैंड्स। किसी के माइंड में आते हैं क्या ये क्वेश्चंस? ओके, बस इतने ही, बाकियों को नहीं जानना डेथ के बाद क्या होता है? ओके, इट्स लाइक क्यूरियोसिटी इज गुड। और इसी के लिए वी आर ब्रिंगिंग अ वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर यू गाइज। इट्स सेड दैट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वी आस्क। तो अपनी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए फर्स्टली वी नीड टू improve the quality of our questions, and for this we are bringing a very exciting course, and it is named Journey of Self-Discovery. It is a transformative 3-session experience. 3 सेशन रहेंगे इस कोर्स के, which are based on the teachings of Bhagavad-gita. And जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपको मन में क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज़ के लिए, especially the topics relating to your own life, that will be cleared in this session. This course promises life-changing insights and spiritual wisdom that can truly elevate your life. Now we will play a very short video that will give you a brief of what is this course is about and why you need to register for it. I request the team to play the video now.
में बिल्कुल पिकनिक जैसा लगा ही नहीं कि कोई बोरिंग चीज कर रहे हैं, हर चीज में बहुत मजा आया। So much of enthusiasm and all. मैंने कुरुक्षेत्र की ट्रिप के बारे में सुना, मैं तो काफी एक्साइटेड था जाने के लिए, और अभी भी एक्साइटमेंट खत्म नहीं हुआ, ट्रिप खत्म हो रहा है, बट मेरे अंदर का एंथुसियाज्म अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। तो मैं आया बिना किसी दोस्त के, और अब मैं जा रहा हूँ बहुत सारे दोस्त बना के। सबसे ज्यादा मतलब रियल हैप्पीनेस मुझे जिंदगी में आज पहली बार मिली। So this video was about what is going to happen in this course, और ये सभी आप live experience कर सकते हैं. And I believe for most of you this is something new, this is something different, and it's containing 3 sessions that will be followed by delicious meals at the end and ecstatic kirtan. And इस course की fees होगी just 100 rupees, including all the 3 sessions, including delicious prasadam at the end and all the course structure that we discussed now. जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अब एक QR display हो चुका है screen पे, and our volunteers are all around you who are carrying the posters of this course, and you all are requested that this is the opportunity not to be missed, and we cordially invite you all to embark on this journey of self-discovery and register for this course. This form is for 2 things. Firstly, the feedback for this session, and secondly, the registration for the journey of self-discovery course. It is like, you know, आज इस event में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, I believe हम सबके लिए change होगी. हमने बहुत सारे संकल्प लिए, कुछ ने संकल्प लिया that we will leave procrastination, at least we will try to control, and some are saying that we will start chanting. So अगर एक छोटा सा सेशन इतने ज़्यादा चेंजेस ला सकता है, then you can imagine that if you come regularly for the sessions and get the wisdom, तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है. And this is something that is required for all of us. We are all struggling with our mind, and this is the course that will make your mind from enemy to your friend, and that is itself enough to do the miracle. Thank you. Now all you can register for the course, please. Thank you. As you know, this is for 3 weeks. We will have 3 sessions, and this will start right from the next week. And at the end of this course, it will be followed up by a trip to the Kurukshetra. As you saw some of the images, इस वीडियो में भी कुछ images Kurukshetra trip की थी. So at the end, by the end of this course, we will all go for a Kurukshetra trip. And Maharaj ji ने जैसे अभी announce किया that next week is going to be a Sunday feast. Basically Sunday की पार्टी हमारी तरफ से रहेगी. So you all are invited on next Sunday also. We will have feast, especially the paneer की सब्जी. Thank you. Okay, 3 Sundays को कोर्स रहेगा, ये 3 sessions है, सभी Sunday को हो गए. Sunday is convenient. Most of us have off, so it will be convenient to reach here. So you know, we all are college students, so we decided कि इस कोर्स को Sunday को करवाया जाए. Even if you can come for 2 session, 1 session, make sure आप still register करें. As you have come here, so don't resist. This opportunity is not to be missed. We request to all everyone, आप at least feedback दें. You can scan this QR. If you face any issue, you can reach to the volunteers near you. It's a very short form. You just need to fill that how you felt in this session, what do you think the changes it will bring to your life, and then it will have the option to register for the self-discovery course.
Regarding the payment, it can be done online. The QR code is mentioned right within the form. And if you feel any issue with the UPI or internet not working, then you can reach out to our volunteers. Anyone from you have second cordless mic? किसी के पास mic है? Any volunteer? Anyone from the public? If you have, then you can bring here it on the stage. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. After you register in this program, now comes the most exciting part of this event, and it's a mantra rock dance. As we proceed towards the conclusion of our spiritual journey here, we request you to get ready to let your spirit soar high. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Bol, Hare Krishna. We'll just start in a few minutes with the mantra rock dance. Till then, all you are requested to please register and provide your feedback for the session. You can raise your hands if you feel any issue. If you face any issue, a volunteer will get to you. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Regarding the Sunday feast, we will communicate you the timings in WhatsApp groups. I believe you all are added in the WhatsApp, so you can stay connected. We have both options. You can either register online or offline. अगर आपको online paper, offline paper मिला volunteer से, then make sure you need to return that to the volunteers only. Only then the registration will be counted. I repeat, if you are doing it offline, then you need to return the paper to the volunteers after making the payment. Very shortly we will begin with the mantra rock dancing. Make sure you register. Just in 1-2 minutes we will get started. Volunteers are requested, please इसको जल्दी complete करें. We now need to start with the mantra rock dancing. हरे कृष्णा. चाहिए दोनों हाथों को. हरे कृष्णा. बोलेंगे जोर से. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्णा कृष्णा.
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरि। तो इस फेस्टिवल का नाम हमने क्या रखा था? तरंग। किसका तरंग? किसका तरंग? दुखों का तरंग या आनंद का तरंग? कितने लोग आनंद के तरंगों में पूरा बह रहे हो? अरे वो, और कितने इसमें और गोते लगाना चाहते हो? हरी वो, तभी पूरी हमारी मंत्रा रॉक बैंड तैयार है हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। तभी आप सबको बहुत उत्साह के साथ कीर्तन भी करना है और नृत्य भी करना है, चैंट भी करना और डांस भी करना है। सब तैयार हो तो बोलो हरी वो, हरी वो, हरी वो, हरी वो, हरी वो, हरी वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, एवरीबॉडी चैंट, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी आपने हाथ ऊपर कीजिए और झूमिए लेफ्ट राइट। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नाचिए नाचिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, नाचो नाचो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नाचिए नाचिए, हरे राम नाचो नाचो, राम हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Nato Nato Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare जितने बॉयज यहाँ पे हैं सभी से एक प्रार्थना है, एक बार अपने हाथों को ऊपर कीजिए और जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबके लिए प्रसाद है, स्नैक्स प्रसाद है, किसी ने शर्माना नहीं है, सभी ने जोर से बोलना, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 जय हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा चैंट चैंट एवरीबॉडी कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे सभी कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अभी आगे वाले ने तो पार्टिसिपेट कर लिया नाचने में, अभी पीछे वाले शर्मा रहे हैं। भैया देखिए, भगवान के दरबार में आके अगर कोई शर्माता है तो फिर वो जीवन भर के लिए देख लो उसका क्या होना है। तो सभी से प्रार्थना है, भगवान के यहाँ पे आए हैं तो सभी पार्टिसिपेट कीजिए, सबका समय कीमती है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे 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 राम अभी मैं हरि बोल बोलूंगा तो सभी ने कूदना है, हाथ ऊपर करके बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाच ही नहीं रहे यार, आनंद कैसे आएगा जब तक सारे नहीं नाचेंगे, किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा। तो सभी ने नाचना है, सभी ने पसीना निकालना है। बोलो हरि बोल 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 हरि बोल
हाथ ऊपर कीजिए और जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। तो अभी आप सबके लिए स्नैक्स प्रसाद है, आप बाहर ले सकते हैं। जिनको डबल चाहिए डबल भी मिलेगा, लेकिन पहला वाला खाली करना पड़ेगा। खाली डब्बा दोगे तब दूसरा मिलेगा, ठीक है। तो अपना स्नैक्स लेके फिर आप वापस आ सकते हैं। महाराज जी के साथ आप क्वेश्चन आंसर करना चाह रहे थे कुछ डिवोटीज, दे कैन कम बैक। और आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला है, फीडबैक फॉर्म, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीक से हम जो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स है उसको आप उसमें आ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन आंसर के लिए जरूर आइएगा। आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो जो आ सकता है प्लीज आइएगा। समय तो निकला जा ही रहा है ना, क्यों ना अच्छा अचीव करके जाएं। हरे कृष्ण।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Yogeshwari Yogi. Oh, Yogeshwari. Adat Maha Yogeshwari. Hey, a lot of questions. We need more books here. See. No. We need books from nice devotees. They are not leading. They are coming. We need books sponsored. How many can you sponsor? Hare Krishna, Hare Krishna. 50, yeah? Hare Krishna. So again we would like to welcome His Holiness Bhakti Brihad Bhagavad Swami Maharaj. Hari Bol. So those who have questions, you can raise your hands and you can ask questions with Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Now there was one question in progress. What Sharan? Karan. Karan. Yeah. Okay, you can continue. Actually, in Mahabharata we have learned that Karan is the son of Kunti. So your name is Karan? Yeah. Say Karna. Karna. Okay. So, but we also know that there are 5 Pandavas who have different fathers. Like one, like I don't remember the exact son, but one Pandav is the son of. All close. One Pandav is the son of, I think, Yamraj. Yudhishthir. Yeah, Yudhishthir. So Yudhishthir is technically the brother of Karna, but here he is brother. He is Yudhishthir's brother. So is Yudhishthir? Brother. Yudhishthir's. Yes. So how is it possible? How is what possible? Like Yamraj is the son of Sun, Lord Surya. Yamaraj. Yes, Yamraj. Yamaraj is the superintendent of death. Yeah, but in and Karna is coming from the sun god. Yes. But Yudhishthir is coming from Yamaraj. Yes, and so what's the problem? So I think we have studied that Yamraj is the son of Surya. Yamaraj is the son of Surya. Yeah. Where you studied that? On internet. Yeah, internet. Yeah. Who wrote it on internet? The one who wrote that. Yeah, but who's that person? No, the same. Who is that person? He would be one of us. So you're having people writing things on internet that's interpreting according to their own way and creating some misunderstanding. Yes or no? Yeah, maybe yes. Yes. So don't look at the internet. It's all confusing. We have so many scriptures that are properly translated according to disciplic succession or Guru Parampara. You understand? We have Bhagavad-gita, we have the Bhagavad Purana called the Srimad-Bhagavatam, we have Sri Chaitanya-Charitamrta, and we have other books. So you read those books that are bona fide in their authorized translation according to Guru Parampara and disciplic succession. You will find so many things on the internet which are not according to Guru Parampara or disciplic succession. Avoid it. Okay. Because you are hearing from somebody you don't know. But I also. You don't know the person, yes or no? Yeah. But so Bhagavad-gita says, Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tatvadashinaha. That you have to inquire from a person that you know. That you can see and know and understand, and he understands you. But internet is impersonal. So you cannot quote somebody you don't know. You don't know whether the fellow is eating meat or is
having illicit activities, and he's putting something on the internet, and you're following that fellow, but you don't know who he is. Okay. Can you understand so far? Yeah, I understood. Yeah. Now 1 second. You know Amitabh Bachchan, right? Yes or no? Yes. Yes or no? Yes, I have heard about him, but I don't know who, like what is his personality and all Yes. this. Does Amitabh Bachchan know you? No. So? So whatever he says, you will follow, but you don't know him. At least you see his form, Amitabh Bachchan, but this other fellow you on the internet, you don't even know him. So there's no relationship. But the There's no Shraddha. You know what Shraddha? What is Shraddha? Faith. Faith, yeah. So you cannot quote somebody indiscriminately and you don't know who the person. There's no faith. But can I continue? Yeah, but I'm answering your question at the same time, right? Yeah. So therefore, when we inquire about something or someone, we should quote a bona fide base and a bona fide person. Otherwise we can quote anybody and think that is life, you know. Is that okay? What's your next question? I know you need to go early. We have any samosa left and gulab jamun? We have? No, he didn't take. We have, huh? They saved for you. They saved for you. I'm very thankful to them. Yeah. How many samosas we have left? We will give, huh? Yeah. You make sure you take before you go. Sure. But next question. No, it is in continuation of this. Continuation. Yes. This is But your Mahabharata. No, no. Keech. I would not dare to do this with you. Okay, go ahead. You better not dare. Yeah, sure. Because sometimes I can do, don't tell everyone, only for you. Sometimes I can do open heart surgery without anesthesia. Very painful, but purifying. Tell me. But I also don't know who wrote the 4 Vedas. Like, because I think it was Then not. if you don't know somebody, don't quote. Now ask me a question, that's all. Ask me a question from your personal perspective. Like, when you start quoting somebody, I'll ask you how is he living his life, like that Archbishop, you know. Can you live according to the scripture? So otherwise it's loose talk, everything is loose. What's your question? So my whole question was based on that. Yeah, don't base a question on someone or something you don't know, whether it's bona fide or not. That's called speculation. And speculation takes you nowhere because it remains speculation. It does not have an end. See? We okay? Yeah. Yeah. And another thing with questions, there must be some value to it for yourself. Prabhu, sit. Sit down. I am speaking, his mind is there. Your mind. Sit. Okay. So we should. It is important that when we inquire into our value system of how we can improve as a human being. See? Otherwise we'll find fault with Krishna. How can he in the dead of night, meet so many young girls? I can answer that question too. But what's the value for it for you? You understand? Actually, okay. What was Krishna's age when Mahabharata was formed? Krishna is eternal. Does that answer your question?
Okay. And like we have studied from internet that there are 10 Chiranjeevis who are immortals. Like there are 10 what? Immortals, the one who cannot die. Everyone dies. No, but the soul never dies. No, their body. The soul never dies. Yeah. But the body dies. You are eternal. Don't worry about the 10 Chiranjeevas. You ask a question from your personal perspective, not surfing the internet of speculation. But then why don't I remember my past birth? Remember your past birth. What is the value of remembering your past birth? Tell me. What value will it give to you currently? Maybe if I was successful, then it would. Successful in what? In the material world and material births, you'll never be? Maybe in spiritual. Never be? Yeah, there's no success. Everything is failure. Because it is temporary. It may sound real, but it's temporary. There's beginning and end. But I was talking in context of spirituality. No, in spirituality, what time is it now? Say 2:28. 2:25. 2:28, right? Yeah. Your name is Karnan. Yeah. So Karnan, exactly this time 2:28 yesterday, what were you doing? I was sleeping. I was taking a nap. Yeah, but in the nap, what were you doing? I was doing nothing. You don't know. Yes or no? Yeah. So how can you remember your past birth? 2 days ago at 2:28, what were you doing? I was at my work in university. What were you exactly doing at 2:28? I was studying. What were you studying exactly at 2:28, that point? Since I am a law student, You don't know, right? Yeah. Naughty. And he wants to know what happened in the past life. I got he doesn't know what happened 2 days ago. Got the answer? I got your. Thank you. You want that samosa now? Sure. And the gulab jamun. And in case I want to ask answers from you in future, then can I get your contact All number? problems solved, all questions answered for you. Science of self-realization. He wants to take a picture. Camera. Smile. Say paneer sabji. No, you don't cherish that book. You start reading the book, just cherishing it. You're reading it from when? From today. Thank you. Give him his samosa and gulab jamun. If he wants more, give him more. Go there. Somebody help him, please. Who's helping him? Haribol. Wait, take him with you. Just now you'll go another.